Hello, dear students. Welcome to Top Rankers. So I hope you were expecting your favorite Shazli ma'am or Sukanya ma'am to come here and help you with the English section of the English perspective of the editorial section, right? But I am here today because they couldn't, and I will try to do justice to the fantastic job that these girls have been doing all this while. So I guess without further ado, let's get started. Just a second, children. We'll just get started. Hello, Radhe Radhe. All right, so shall we start? Well, I have, hey Amarja, good to hear from you. So we'll just start. So I will be discussing the two editorials that were there recently in the Hindu, and I'll just give you the gist of the two articles that were there. And I will take you through the words, the phrases that were more important than the others. We will just see their usage in the sentence, and we will understand some synonyms and antonyms that should be crucial to your understanding of the passage or the article, right? All right. Hello. I guess let's just start. So, the first one, the first editorial was around names and bonds, a very interesting title, I'd say, names and bonds. So, this one is essentially around the editorial bonds that are in question, and a lot has been done around these. And the court has asked the SBI to produce the details around the editorial bonds by the end of day today. So we should have some interesting news for you all to read tomorrow and to discuss tomorrow. I guess let's just start looking at some important words that were there in this one. So the word throat. Now, see, it's a beautiful word. It's a verb essentially. Now, it simply means to prevent, to obstruct. Now, let's say something is running very smoothly, but something obstructs, something stops it, stops the smooth movement of this flow of event. That thing is thwarting it. So, yeah, that's what Sanjay was about. But we will not see, I'm sure these have been explained in detail to you by your GK faculty members, so I won't go there. We'll only look at some words that will help you understand or comprehend the meaning of the passage better, all right? That's the idea. So simply, thwart simply means to obstruct. जैसे एक साइकिल चल रही है, पहिया चल रहा है, घूम रहा है, आप पेडल कर रहे हो, आपने बढ़िया सा आगे जा रहा है, लेकिन किसी ने आगे कुछ रुकावट लगा दी, कुछ भी ऐसा करा कि वो स्मूथ फ्लो रुक गया, तो वो चीज ने आपके उसको हिंडर किया है, ऑब्स्ट्रक्ट किया है, फॉइल किया है, इम्पीड किया है। किसी भी वर्ड को लर्न करने के लिए, समझने के लिए सबसे आसान तरीका होता है कि उसका सबसे इजी मीनिंग को हम समझें। ऑब्स्ट्रक्ट, रुकावट, रोकना, ऑब्स्ट्रक्ट करना, रोक देना। अब अगर इसका मीनिंग ऑब्स्ट्रक्ट है तो एक चीज तो क्लियर हो गई दिमाग में, वर्ब है और उसका मतलब होता है रुकावट डालना, रुकावट बनना। नाउ द अदर क्लोज सिनोनिम्स कैन बी हिंडर, foil or impede. So let's say Nobita is on his way to Shizuka's house and Jian comes and he stops him. Says, कहाँ जा रहा है? क्यों जा रहा है? So he has obstructed or he has impeded or foiled the I guess his movement to Shizuka's house. Now, the way this word was used in the sentence was here in the passage was the Supreme Court's decision thwarted the SBI's attempt to delay the disclosure. तो इस डिसीजन से उनका अटेम्प्ट जो है रुक गया था कि उनको जो वो डिले कर रहे थे वो रुक गया था, तो उन्होंने स्पीड अप कर दो भाई साहब, जल्दी जल्दी चाहिए हमें तो. Okay, now let's take a look at the next word. All right, the word is disclosure. Now, disclose करने का मतलब है, disclose is a verb which means to reveal. अगर disclose reveal है, disclosure is the noun form of the same thing, which means the act of making the information known to everyone. So, if something is in full disclosure, that means सबको उस चीज के बारे में सब कुछ पता है. Simple as that. Now, some good synonyms are revelation, unveiling, declaration, divulgence. Divulge करना या declare करना. Now see, closest word that will help you remember the meaning is declare करना. कोई चीज आपने declare कर दी, आपने उसे disclose कर दिया, आपने उसको
known कर दिया, public कर दिया, सबको पता है. So that's what it is. So revelation करना, unveil, veil होता है ढकना, unveil नहीं ढकना. So you're just removing the layer. So that's what it is. Some common antonyms are concealment. Conceal है छुपाना, ढकना. Hide, suppression और secrecy. तो किसी भी चीज को अगर आप ढक रहे हो तो आप उसको कंसील कर रहे हो, और अगर आप उसको रिवील कर रहे हो, आप उसे सबको बता रहे हो, तो आप उसे डिस्क्लोज कर रहे हो. नाउ Sanjay, I'm sure a lot will empathize with you and understand the emotion involved here. So the way the word was used in the passage in the article was the SBI is required to make a full disclosure. तो उनको पूरा उनको बताना पड़ेगा कि परचेज किसने किया और कहाँ पे हुआ, सब कुछ all the details will have to be revealed. The next one, redeem. All right, students. I think I forgot to inform you right in the beginning that there will be a short quiz that will follow the end of each article that we will discuss. So make sure that you are trying to imbibe the meaning of the words and try to retain them as well, because you will feel good about yourself if you will be able to answer the questions in the quiz. All right. So let's see the next one. Redeem. Now, English is a beautiful language. I mean, that's what I think. And I'm only talking about the language and nothing else. So, English में ना किसी भी word का Oh, yes, that's right. Now see, एक वर्ड का ना एक से ज्यादा मीनिंग पॉसिबल होता है. किसी भी एक वर्ड का एक से ज्यादा मीनिंग पॉसिबल होता है, एंड द वे इट इज यूज्ड इन द सेंटेंस द मीनिंग कैन वेरी significantly. Now let's see. Now redeem means to make something look less bad. So if at all you redeem something, that means you are probably it was something not so good, figuratively or maybe literally. But then if you redeem something, you're making it appear less bad. So you're trying to enhance that thing if you're redeeming it. The next one, the next meaning can be exchange or convert something. So let's say when you redeem a share, probably you get money in return, right? And I mean, it also means especially bonds or money or value. It also means to pay a debt. So if I'm redeeming something, it means I'm paying off a debt. Now, how it was used in the given article, the bank should disclose the names of the parties that redeemed the electoral bond. So it was used in this one. So in exchange in exchange for something, this is how the electoral bonds were used. I'm sure you understand the context of what this is about. So that is what it meant. Now, some good synonyms can be exchanged, cashed, converted, or claimed. Antonyms: withheld, retained, kept, or I mean, see, if you're redeeming it, you are letting it go, you're encashing it. But if you are, the antonym can be you're withholding it, you're keeping it back. Upshot simply means the outcome of something. So किसी भी चीज का upshot उसका outcome होता है. So it's a final result or consequence of something. Now see, the way it was used in the sentence, the upshot of the court's decision is that SBI must disclose the data. तो उसका outcome क्या है जो कोर्ट ने बोला कि भाई हमें तो information आज शाम तक 12 मार्च को शाम तक चाहिए. तो उसका outcome क्या है, उसका upshot क्या है, चलो भाई निकालो information, पूरा disclosure चाहिए हमें अब. So that's what it is. A very simple word to help you remember the word upshot is a result. So upshot is a result. Upshot is a result. So it's a consequence, it's a conclusion, it's the outcome of something. Uh, let's see. The next one. Contempt होता है एक scorn या disdain या dislike, intense dislike for something. So if I hold contempt against something, I kind of dislike that thing. So contempt simply means गुस्सा, चिढ़ किसी भी चीज के लिए, किसी भी concept के लिए. So synonyms: disrespect, defiance, disobedience, disregard. आप किसी चीज को पसंद नहीं करते, I guess not. I couldn't agree more. Now, if you do not like something, if you hold contempt against something, you kind of disrespect it, disregard it. That's what it is. So, antonym क्या हो जाएगा? अगर disrespect synonym है, तो respect, obedience, compliance, and admiration. I guess हर word के नीचे उसी का antonym लिखा है. Disrespect, respect, defiance. आप डिफाई करते हो, आप अथॉरिटी को मना करते हो, नहीं करेंगे, नहीं सुनेंगे, मैम आपकी बात तो बिल्कुल नहीं सुनने वाले आज हम. ओबीडियंस, मैम आज तो हम आपकी सारी बात सुनने वाले हैं, बहुत अच्छे मूड में, रॉयल्टी टाइप का फील कर रहे हैं हम. Disobedience is when you disobey, when you do not follow. Compliance is when you follow. So if at all you're asked to do something in a certain manner, you're following it, you're doing it in that manner, you're complying.
And disregard is not paying enough respect. Admiration is paying respect and showing respect and love or consideration for something. So contempt is, yes, contempt against court. Absolutely right. Now, how was it used in the sentence? The court kept the threat of contempt action alive. So that's how they used it in the sentence. So they kept it alive. The next one. Invalidate होता है to show that something is wrong. Validate करना होता है to certify that something is right. So if I validate your opinion, I'll say, okay, what you're saying is right. I completely agree. But if something is invalidated, it simply means that, okay, whatever you say doesn't hold good. It's not good enough. I don't agree with it. गलत है. तो invalidate करना होता है किसी भी चीज को बताना कि ये चीज गलत है, invalidate होता है. How was it used in the sentence? The bench, as a part of its judgment, invalidated the electoral bond scheme. So, whatever it was, but then they invalidated whatever it was. So, that's how it was used in the sentence. So, good synonyms are disapprove, refute, contradict. Invalidate था मना करना. Refute करने का मतलब होता है refuse करना, मानने से मना कर देना. So, refute, the best way to learn, or maybe to disapprove is the best way to learn. Now, contradict, refute, disapprove. अब अगर इनवैलिडेट था बात को नहीं मानना तो वैलिडेट और सपोर्ट करना होगा बात को मानना. So if I validate something, I espouse it, I support it. But if I invalidate it, I disapprove, I refute or I contradict the given statement or the given information. सीलोज बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है. सीलोज एक्चुअली पता है सीलोज होता क्या है? जो गांव होते हैं, खेत होते हैं, उसमें तुमने देखा है वो ऐसे कुछ माउंट सा बना देते हैं और उसके अंदर अपनी ग्रेन्स को स्टॉक कर देते हैं. कभी जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं फ्रॉम वन सिटी टू अनदर, रास्ते में वो जो गांव पड़ते हैं वहां पे देखा है. तो वो जो वो माउंट सा बना देते हैं ना, हे का, ग्रास का ऐसा लगता है, वो सीलो होता है. तो सीलो होता है एक अलग सा इंक्लोजर बनाना जहां पर आप सेपरेटली चीजों को स्टॉक करते हो. मे बी इस वाले में उन्होंने एक ग्रेन को स्टॉक कर दिया, दूसरे वाले सीलो में दूसरे ग्रेन को स्टॉक कर दिया. सो दिस इज द ओरिजिन ऑफ द वर्ड सीलोज. नाउ हमारी लैंग्वेज में, क्योंकि हम तो गांव में नहीं रहते, हम तो रहते शहरों में, यहाँ पर वो सब नहीं होता. पर हमारे सीलोज क्या है? हमारे कॉन्टेक्स्ट में सीलोज क्या है? इट्स अ सेपरेट सिस्टम और डिपार्टमेंट. सेपरेट सिस्टम और डिपार्टमेंट, लेट्स से किसी किसी ऑफिस में सेपरेट सिस्टम और डिपार्टमेंट जो इंडिविजुअली काम करते हैं, आइसोलेशन में काम करते हैं, दे आर नॉट इन सिंक विद द अदर्स. सो दोज आर द सीलोज हियर इन आवर अर्बन लाइफ. लेट्स सी. तो कंपार्टमेंट, डिविजन, आइसोलेटेड यूनिट हो गए हमारे सीलोज. चाहे तुम गांव के सीलो की बात कर लो, चाहे यहाँ की बात कर लो, दैट्स व्हाट इट शुड मीन. एंटोनिम, अब देखो सीलो में अगर हमने अलग अलग कर दिया, बाइफरकेट कर दिया, सेग्रीगेट कर दिया, आइसोलेट कर दिया, तो उसका एंटोनिम क्या हो सकता है? इंटीग्रेट कर दिया, जोड़ दिया, कोलैबोरेट कर दिया, मिल के काम करा, कोऑपरेशन और यूनिटी. तो सीलो डिवाइड करेगा और कोलैबोरेशन या इंटीग्रेशन या यूनिटी उसको जोड़ेगा. ओके. एग्जैक्टिट्यूड, अच्छा इसमें वर्ड में ही उसका मीनिंग है. एग्जैक्टिट्यूड है किसी भी चीज की एक्यूरेसी, किसी भी चीज का एग्जैक्ट होना. सो कोई चीज अगर एक्यूरेट है और वो केयरफुली केयरफुली डन है तो वो अपने एग्जैक्टिट्यूड में काम कर रही है. एग्जैक्टिट्यूड कम्स फ्रॉम द वर्ड एग्जैक्ट. नाउ लेट्स सी. इट सिंपली मीन्स प्रिसिशन और एक्यूरेसी. प्रिसिशन क्या है भाई? अगर 2.1 तुम एक केमिकल डाल रहे हो उस ट्यूब के अंदर, तुम्हें 2.1 से mg ऑफ समथिंग डालना है तो आप 2.1 ही डालोगे, आप 2.2 नहीं डालोगे, आप 2.01 भी नहीं डालोगे, आप 2.1 डालोगे. आप एग्जैक्टिट्यूड में काम कर रहे हो. सो इट मीन्स प्रिसिशन, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल जितना होना चाहिए उतना, और एक्यूरेसी. सो लेट्स से आपके टीचर ने आपको बोला आप 2 घंटे रोज रीडिंग करनी है. आपने बोला एग्जैक्टली 2 घंटे, 2 घंटे 1 मिनट के बाद पेपर बंद. अब बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे हम एग्जैक्टिट्यूड में काम करते हैं, प्रिसिशन से काम करते हैं हम बिल्कुल. सो दैट्स समथिंग व्हाट एग्जैक्टिट्यूड कुड मीन. नाउ लेट्स सी. Now, the antonym will be inexactitude, and how it was used in the sentence. The SBI was required to match with exactitude all purchase with recipient. भाई उन्होंने बोला कि जो purchase है recipient के साथ हमें तो बिल्कुल बराबर से precision से match करना है. So, I guess Amrita, that's a good statement. Courts are silos, independent of government. Interesting way of looking at it. The next one. Diligent. I guess this is one common word. I am sure a lot of you already know the meaning. तो ये diligent लोग वो लोग होते हैं जो बड़े ही meticulous होते हैं, बहुत ही thorough होते हैं, बहुत carefully काम करते हैं अपना.
तो उन्हें जो चीज़ जैसी चाहिए वैसी चाहिए। तो जैसे लेट से आपको लगता है मेरा पिलो तो यहाँ पर रखा होना चाहिए, मेटिकुलस यहीं होना चाहिए, इसको हिलाओ मत, मुझे यहाँ, अगर यहाँ रखोगे मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ये तो थोड़ा सा मेटिकुलस होना हो गया। डिलीजेंट का मतलब होता है आप अपने काम को बहुत मेहनत के साथ, बहुत केयरफुली करते हो। अगर आप हार्ड वर्किंग हो लेकिन बहुत ध्यान से अपने काम को करते हो, तो यू आर diligent. Now, some common synonyms can be conscientious, thorough, careful and meticulous. Now, अगर कोई conscientious है और thorough है तो opposite हो जाएगा negligent, careless, indifferent और even lazy. Now see, diligence means involving some amount of hard work as well, along with being careful. Now, how it was used in the sentence? A diligent civil society could use a disclosure to match donors and parties based on purchase and redemption date. Now, we're talking about a society that's very careful in its uh, approach to viewing certain aspects of things. अनरैवल का मतलब होता है सिंपली रिवील कर देना। किसी भी चीज को रिवील करना या अनकवर करना होता है उसे अनरैवल करना। सो इफ एट ऑल, एंड जनरली से देयर इज एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज इन्वॉल्व। सो थैंक्स संजित। नाउ सो अनरैवल, अब लेट से कोई चीज है, आपने उसको ढक के रखा है, छुपा के रखा है, एंड देयर इज अ सरप्राइज इन्वॉल्व इन इट, बट किसी ने आके बता दिया, ओ संचित ने तो ये प्लान कर रखा है, सो ही इज अनरैवल्ड योर प्लान टू probably surprise somebody. So मार्टिनेट और डिलीजेंट सेम नहीं होता शिशिर। मार्टिनेट वो लोग होते हैं जो थोड़ा सा टिपिकल होते हैं चीज को लेकर कि कोई काम कैसे होना चाहिए। तो दीज पीपल बिलीव इन डिसिप्लिन, दीज पीपल बिलीव इन हार्ड वर्क। मार्टिनेट इज एन एडजेक्टिव दैट इज यूज फॉर सर्टेन सेक्शन जो डिसिप्लिनेरियन होते हैं ना। जैसे आप सोचो आर्मी ऑफिशियल्स, अगर 5 बजे उठना है तो 5 बजे उठना है। सो मार्टिनेट थोड़ा सा डिसिप्लिनेरियन टाइप के लोग होते हैं, एंड डिलीजेंस इज मोर अबाउट hard work. It is more about being careful about things. So there's a difference, there's a fine difference between the two words. Okay, coming back to the word unravel, so simply to uncover something, to reveal something, to expose something is to unravel it. So the opposites are conceal, hide, obscure और complicate. भाई किसी चीज को आपने खोल दिया, दिखा दिया, तो आपने उसे unravel किया, लेकिन आपने उसे ढक दिया, आपने उसको छुपा लिया, तो आपने उसे conceal कर दिया. Now let's see. The way it was used in the sentence, the data may help unravel whether corporate houses or individuals. तो सिर्फ रिवील होगा ना, जब ये चीज सामने आएगी कि उन्होंने किसके नाम पे रिइशू किए थे बॉन्ड्स और कितना पैसा था, तो चीजें अनरावल होंगी, अनकवर होंगी, रिवील होंगी. ओके, द नेक्स्ट वन, ब्रोक एनी फर्दर डिले. वैसे एग्जैक्ट वे में जब इसको हम यूज करते हैं ना, तो बेटर वे यूज करने का होता है ब्रोक नो डिले. Brook no delay, which simply means I will not tolerate any more delay in anything. So let's just say आपकी मम ने बोला आज तो रूम साफ चाहिए मुझे, और आपने बोला मम्मा बस थोड़ी देर और ये 3 दिन से चल रहा है. Now she'll say I want your room to be clean today. Brook no delay. That means I will not tolerate this any further. You have to clean the room today means you have to clean the room today. So it simply means to tolerate or allow any additional postponement. So they will not brook any delay, simply means they will not tolerate or allow any additional postponement. Foil, I think we've discussed this word before, thwart करना, किसी को stall करना, impede करना, obstruct करना, hinder करना, simply means किसी होते हुए काम को, उसको रुकावट डालना, उसमें उसको होने से रोकना. Hurted, I think, is not the right word to use, Sanjay. Other than that, I think you've done a fantastic job. So it simply means to prevent or stop the success of an attempt or plan is to foil it. जैसे generally आपने newspaper में देखा होगा that the enemy of the the soldiers of the neighboring country want to enter the territory of another neighboring country. The soldiers, they foil this scheme, this plan. They do not let, so maybe they crossfire or they do whatever they have to do, but they foil their attempt to enter their own country. So that is how foil is used. So किसी चीज को रोकना आगे बढ़ने से is to foil. I guess we've already taken a look at the meanings. The next one, construe. कंस्ट्रू का सिंपल सा मतलब होता है किसी चीज को आपने समझा कैसे, आपने उसे कैसे समझा, कैसे परसीव करा, वैसे आपने उसे कंस्ट्रू करा. मिस कंस्ट्रू जब आप किसी चीज को गलत समझ लेते हो. कंस्ट्रू सिंपली हाउ यू अंडरस्टैंड द मीनिंग इन अ पर्टिकुलर वे. सो सम गुड synonyms are
interpret, understand, explain और deduce. Now, I've written them in past because वो word past tense में given था, but अगर हम उसे simple present tense में भी देखेंगे तो it simply means understand करना. Construe मतलब आपने कैसे construct करा किसी information को, वैसे आपने उसे construe करा. So if I say something to you, आपने उसे जैसा समझा, वो आपका construction जो उसका था, वैसे आपने उसे construe करा. It's a verb. So the antonyms are misinterpret, misunderstand, confuse or distort. Um, misconstrue कर देते हैं जब हम उसे गलत interpret कर लेते हैं. So the way it was used in the sentence, it appears that the initial direction of the Constitution bench had been construed. It appears कि वो ऐसे structure हुआ था कि आप ऐसा समझो उसको, right? The next one. Oh, the quiz that follows. I guess, are we ready? Should I start? So I'll share a question with you. I mean, I'll share a word with you. There will be options to choose from. Then you have to give me the right answer here. All right. So I guess let's just start. What does the author mean by the word taught in the given passage? Does it mean to facilitate? It means to obstruct, assist, or promote? All right, let's start. What is the meaning? What is the meaning of the word thought? Okay, I've got the first answer from Sanjay. Any other person, any other child who would like to answer? Okay. A lot of you say it means to, yes, obstruct. Absolutely right. So it simply means to foil, to impede, to hinder, and to obstruct. Absolutely right. The next one, upshot. What does the word upshot mean? So does it mean conclusion? Does it mean cause? Does it mean prelude? Does it mean prediction? I'll tell you the meaning of the word prelude. Prelude is anything that works, something that works like an introduction to something, is a prelude to that thing. Absolutely right, Amrita. Couldn't agree more. So prelude is something that works like an introduction or something that introduces something. Yes, absolutely right. This means a conclusion. The next one. Okay, the synonym for the word construe. Does it mean conceal? Does it mean misinterpret? Does it mean disclose? Does it mean clarify? No, not exactly like a preamble. I mean, prelude is more like an action that happens before something else happens. That's a prelude. So this one is clarified. When you construe something, you kind of no, construe doesn't mean conceal. Construe is to structure, to show. So it's definitely not misinterpret. It's definitely not concealed or disclosed. Here in this context, it could mean clarified. The next one, the antonym for the word diligent. What is the word? What is the antonym for the word diligent here? Diligent was somebody who was hardworking, somebody who was conscientious. So we need something that is antonym, something that gives you the contradictory meaning for the word diligent. Conscientious, thorough, negligent, meticulous. Diligent. I need the antonym for the word diligent. Type in the chat box. Let's see. हमें एंटोनिम चाहिए जीत. एंटोनिम चाहिए. मेटिकुलस एंटोनिम थोड़ी होगा, वो तो सिनोनिम होगा ना. इट विल बी नेग्लिजेंट. देखो, डिलिजेंट वो था जो कंसेंशियस था, जिसको लगता था मैं अपने काम को अच्छी तरह करूं, मैं अपने काम को बहुत थरली करूं, बढ़िया सा कर लूं. नेग्लिजेंट वो लोग हैं जिन्हें फर्क नहीं पड़ता, जिनको फर्क नहीं पड़ता, जो कर्सरी काम करते हैं, जो राइट, एब्सोल्युटली राइट. देखो, मेटिकुलस, थरो और कंसेंशियस तो सिनोनिम है डिलिजेंट के, कि आप अपने काम को बहुत अच्छी तरह से करना चाहते हो.
अगर आप कर्सरी काम करते हो, अगर परफंक्टरी काम करते हो, वो होता है कि आपने ध्यान से काम नहीं करा, डिलीजेंस के साथ काम नहीं करा। द नेक्स्ट वन, ओके, अ वेरी गुड क्वेश्चन। What is the author's tone when describing court's rejection of the bank's application for time? शुरू में जो राइटर ने लिखा था फर्स्ट लाइन में, आई कैन टेक यू थ्रू दैट पार्ट, जल्दी से एक बार उस पर नजर डालते हैं। देखो, ये रहा, आई रीड दिस फॉर यू। The court did well to thwart SBI's attempt to delay the detail of electoral bond. राइटर ने बोला कोर्ट ने बढ़िया काम करा है ये कर कर। अब बताओ, the entire passage was around that only. तो अब बताओ, व्हाट इज द ऑथर्स टोन व्हेन डिस्क्राइबिंग कोर्ट्स रिजेक्शन ऑफ बैंक्स एप्लीकेशन फॉर टाइम? क्या है, आपको क्या लगता है? कॉन्डिसेंडिंग होता है जब हम अपने आप को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, मैं तुमसे बेटर हूँ, मुझे तुमसे ज्यादा आता है, तुम क्या हो, तुम किस खेत की मूली हो। कॉन्डिसेंडिंग एटीट्यूड। प्रेज होता है किसी को जेनरली अप्रिशिएट करना। न्यूट्रल, ओ, न्यूट्रल होता है नॉट रियली टेकिंग साइड्स। एंड इनडिफरेंस होता है अपैथी, व्हेन यू आर नॉट रियली मूव्ड बाय द इवेंट्स, तो होता है इंडिफरेंस। एंड आई थिंक मैंने गलती से आंसर पे क्लिक कर दिया है, बट देन उसे बोला था ना, द कोर्ट डिड वेल। कौन बोल रहा है? ऑथर ही तो बोल रहा है। बोला बढ़िया काम कर दिया कोर्ट ने बहुत, तो दे डिड वेल, सो आई गेस यस, द आंसर वाज प्रेज। द सिनोनिम फॉर द वर्ड कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट था गुस्सा, चिढ़ किसी चीज के लिए, किसी कॉन्सेप्ट के लिए। ये क्या कर दिया, ये कैसे कपड़े पहने हैं, सो ये आजकल जनरेशन कैसे कपड़े पहनती है, तो दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स। Obedience, respect defines compliance. Yes, that's absolutely right, Jeet. Absolutely right. But then let's take a look at this one now. So this is synonym for the word contempt. Synonym चाहिए हमें. Question को ध्यान से पढ़ना is super important. We make a lot of mistakes if you don't read the question well. Amarja, are you not around? Why aren't you answering, Amarja? Is it difficult or you're not around? So question 6 is compliance. Contempt, uh, I guess it should be defiance. देखो, कंटेम्प्ट होगा जब आपको पसंद नहीं है, जब आप बोलते हो ये तो मुझे पसंद ही नहीं है, मैं क्यों करूं, आप मना कर दोगे। मम्मी ने बोला आज तो करेला खा लो, मैंने करेला बनाया, मैंने कहा, नहीं मुझे तो बिल्कुल नहीं ऐसा लगता, हम तो मैगी खाएंगे। तो आपको गुस्सा आ रहा है और आप डिफाई कर रहे हो, नहीं खाना, कैसे बना दिया करेला। सो डिफाइंस या कंटेम्प्ट आर क्लोज टू वन अनदर इन मीनिंग, ऑलराइट। कंप्लायंस नहीं होगा। कंप्लायंस होता है, कंप्लाई करना होता है, कंफर्म करना, यानी कि मानना। मैं बोलूं अच्छा ठीक है, 2 घंटे रोज पढ़ो, रीडिंग करो, यस मैम आपने बोल दिया अब तो हम रोज 2 घंटे पढ़ेंगे। सो व्हेन यू कंप्लाई विद समथिंग, यू काइंड ऑफ अग्री विद इट एंड यू फॉलो इट, यू डू इट। जैसे स्कूल जाते हो, आप यूनिफॉर्म में जाते हो, तो आप कंप्लाई करते हो रूल्स के साथ। ओके, कंप्लायंस इज दैट। ओके, जीत हंस रहा है, क्यों करेला अच्छा नहीं लगता जीत? Okay, moving on to the next one, the other passage, the other editorial that was there, which is politics and Passovers. A very interesting read, पढ़ के मजा आ गया था बहुत ही से. Now I will not get into the details of the passage. Okay, संजय कह रहे हैं, कल रात को मेरे साथ करेले बना रही थी मम्मी, रोज उठा के, सुनते ही नहीं है बिल्कुल। सबकी मम्मी ऐसी होती है, आई गेस। नाउ कमिंग बैक टू दिस वन, पॉलिटिक्स एंड पास ओवर्स। अब देखो, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग रीड, एंड जो इनके टाइटल होते हैं ना, दे आर मोर इंटरेस्टिंग टू रीड। सो अगर आप इसमें एडिटोरियल पढ़ने का एक पर्क, एक बेनिफिट ये भी है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को कितना कंसाइज फॉर्म में आप प्रेजेंट कर सकते हो, और तो उसको समरी कितनी अच्छी आप बना सकते हो। अब देखो कितना लंबा, आई गेस 500-600 वर्ड्स का अगर एक आर्टिकल है, उसको जब हम समराइज करते हैं, कितने कम वर्ड्स में हम कितने लेकॉनिक होकर उसको इंफॉर्मेशन को आपको प्रेजेंट करते हैं यहाँ पर एडिटर्स। मैंने से हम, आई मीन दी एडिटर्स, नॉट मी, नो। एंड कितना अच्छा टाइटल उसे हम देते हैं, पॉलिटिक्स एंड पासओवर्स। सो दिस आर्टिकल बेसिकली टॉक्ड अबाउट कैसे पॉलिटिक्स नहीं इम्पैक्ट कर पाई टू सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ अवार्ड्स, दिस अकेडमी अवार्ड्स, एंड कैसे पास ओवर्स हुए हैं अगेन इन दीज अकेडमी अवार्ड्स। सो रिसेंटली एक इवेंट हुआ था अकेडमी अवार्ड्स का, उसमें क्या चीजें इम्पैक्ट करी और क्या नहीं करी। सो दिस इज व्हाट द आर्टिकल वाज ऑल अबाउट। सो I guess I'll give you the context here, थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ इसका। सो लास्ट ईयर जब ये अवार्ड्स हुए थे, ऑस्कर अवार्ड्स हुए थे, तो उसमें एक किसी ने एक फेमस
हॉलीवुड एक्टर की वाइफ के लिए कुछ बोला था. सो द हॉलीवुड एक्टर वाज नॉट हैप्पी अबाउट इट एंड ही went ahead and he slapped this person, this gentleman. So इट गेव उससे बहुत स्पार्क उठा था. नॉर्मली ऑस्कर अवार्ड्स कैसे होते हैं, लोग आके बैठ गए और कन्वीनर आता है, वो प्रेजेंट करता है, लोग आते हैं, अवार्ड लेते हैं, लोग ताली बजाते हैं, हंसते हैं और चले जाते हैं. तो बहुत ही मंडन से, बहुत ही बेनाल और क्लीशेड से हो गए हैं ये सारे इवेंट्स. लेकिन लास्ट ईयर जब ऐसा कुछ हुआ तो उससे बहुत स्पार्क उठा था, लोगों को मजा आ गया था. पहले अटेंडेंस कम होती जा रही थी, कम लोग अटेंड कर रहे थे ऑस्कर अवार्ड, बट उसके बाद मजा आ गया, अच्छा कुछ तमाशा देखने को मिलेगा, कुछ मजा आ जाएगा देखने के लिए. तो लास्ट ईयर कुछ ऐसा हुआ था. इस बार क्या हुआ, इस बार जिमी किमेल ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक ऐसा स्टेटमेंट बोला जिससे उस ऑस्कर इवेंट में एक स्पार्क आ गया था, एक जोश आ गया था. लोगों को मसाला चाहिए, वो मसाला उनको यहाँ पे मिल गया था. सो अ पार्ट ऑफ दिस आर्टिकल वाज अराउंड this spark that Jimmy Kimmel's remark produced and caused rather, and the other things कि जो वो चाहते थे कि डाइवर्सिटी होनी चाहिए, इंक्लूसिविटी होनी चाहिए इसमें, मतलब हर तरह के नॉमिनेशन को जिसमें डाइवर्सिटी रिफ्लेक्ट हो, उसको भी इसमें नॉमिनेशन मिलना चाहिए या रिवॉर्ड मिलना चाहिए. उस चीज के अराउंड, जैसे वो लेट्स से, टू पुट इट वेरी सिंपली, जो नहीं हो पाया. So this article revolves around those things. Now, yes, sir. Yes, that's absolutely right. Okay, now coming to the first word, this is geopolitics. Now, see, it is the study of effects of geography on international politics and international affairs. So, देखो ना, हम दो चीजों को जब जोड़ के एक नया वर्ड बनाते हैं ना, एक बहुत ब्यूटीफुल फिगर ऑफ स्पीच होता है पोस्टमैनचू, उसमें हम दो वर्ड्स को जोड़ते हैं और एक नया वर्ड क्रिएट करते हैं, जैसे जियोपॉलिटिक्स. तो हम जियो की जब बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट everything in general, the physical divisions, and we are talking about its impact on people. So international politics, international relations पे जो उसका impact है, that's geopolitics, and that was the one of the keywords that was used in the summary of the past of the given information. Now, let's take a look at the next one. Hostmanship. अच्छा, hostmanship है the quality or the skill of being a host. Now, let's say I go there, I stand, I announce the awards. So maybe I am not as good, but if I am master of what I am doing, I have the required skills. So probably that art of conducting yourself while hosting something is the hostmanship. And not all of us are good enough, but those who are, they get the kind of exposure that anybody can ever dream of. So hostmanship is the skill, the role of being a host, and the way you deliver everything in a very artistic manner, in the required manner, is what hostmanship is all about. एंकर, एब्सोल्युटली राइट. सो होस्टिंग के स्किल जो हैं, या जो प्रेजेंटर की एबिलिटी है, एमसी करना किसी चीज को, एमसी करने का मतलब होता है किसी चीज को बहुत स्किलफुली प्रेजेंट करना, उसे एमसी करना होता है. सो एमसीइंग होना, सी वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट होस्ट, वो इंसान है जो कर रहा है. होस्टमैनशिप इज द स्किल, it's the art of delivering what you're supposed to deliver and the way you're supposed to deliver. Um, वो जो आर्ट है, वो स्किल है, दैट्स होस्टमैनशिप. तो वेल, आई वोंट से कि उसके ऑडियंस एंटोनिम्स ये हैं, बट देन स्टिल आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ होस्टिंग स्किल और प्रेजेंटर एबिलिटी और द होस्टमैनशिप इन जनरल मीन्स. Mr. Trump had criticized his hostmanship during the Academy Awards. So उन्होंने करा तो ये था, और उसके बदले में he got a chance and he clapped back. Now let's take a look at some more words. Form of art. Absolutely right. It is. अच्छा, ओपस होता है क्रिएटिव वर्क. किसी का भी क्रिएटिव वर्क, इट्स नॉट इंग्लिश ओरिजिन का वर्ड नहीं है, बट ओपस सिंपली मीन्स क्रिएटिव वर्क. एक होता है मैग्नम ओपस. Magnum opus, again, not English. It has its roots in some other word, in some other language, which simply means the best work, the greatest work of someone. तो magnum opus होगा किसी का भी बेस्ट मास्टरपीस. एंड opus is just a creative work. आपने जो भी किया और बहुत अच्छा किया, वो opus है. magnum opus उसी का, आपका बेस्ट काम. लेट्स से आप किसी भी आर्टिस्ट की बात करो, उसका जो बेस्ट काम होगा, लेट्स से क्रिस्टोफर नोलन का अगर हम बोलें, ओपनहाइमर उनका बेस्ट क्रिएशन है, तो वो उनका मैग्नम ओपस या सिर्फ ओपस है. यस अमृता, एब्सोल्युटली राइट.
Generally, stand-up comedians make great hosts. Do they? Well, it takes a lot of grit and gumption to stand there and make fun of a concept that you're talking about, or maybe people in general. Yes, agreed. So, synonym of opus हो गया masterpiece, composition or creation. And उसका antonym हो गया mediocre है, ठीक ठाक है, बस ठीक है, मजा नहीं आया, हो गया, बस ठीक था. A failure or a flop. डाइवर्सिटी स्टैंडर्ड देखो डाइवर्सिटी क्या है डाइवर्स होना क्या होता है रेंज पे काम करना अम, एक पर्टिकुलर नहीं डाइवर्सिटी होगा आप हर क्लैन हर कल्चर हर तरफ से इंक्लूसिविटी को आप लेकर आओ इंक्लूसिविटी होता है जब आप सबको इंक्लूड करके चलते हो जैसे लेट से इंक्लूसिविटी में अगर मैन वोट कर रहा है तो विमेन भी कर सकती है अगर किसी को भी चांस सबको जब हम दें और सबको एक साथ लेके चलेंगे तो इंक्लूसिविटी है और वही क्या है डाइवर्सिटी स्टैंडर्ड है कि हर किसी को साथ लेके चलो किसी को भी छोड़ के मत आगे चलो दैट्स डाइवर्सिटी स्टैंडर्ड दैट इज व्हाट दे वांटेड कि डाइवर्सिटी स्टैंडर्ड मेंटेन होने चाहिए हर कल्चर हर कल्चर से हर जगह से आप इंक्लूड करो नॉमिनेशंस को ऑस्कर्स के लिए यूनिफॉर्मिटी नहीं होता संजित यूनिफॉर्मिटी नहीं होता डाइवर्सिटी में होता है कि आप हर किसी को साथ लेके चलो जैसे लेट से सिर्फ हॉलीवुड की मूवीज नहीं मे बी गिव ड्यू रिस्पेक्ट टू द मूवीज फ्रॉम अदर कल्चर्स ऑल्सो maybe from this aspect or that aspect of life or of globe. So both are diversity standards. So the criteria or measure aim to promote inclusivity and representation. देखो हर बैकग्राउंड से लाने दो आने दो ये था इंक्लूसिविटी यही होती है डाइवर्सिटी स्टैंडर्ड यही था उनका नाउ आई गेस इक्वालिटी लाने की कोशिश की जाती है जब डाइवर्सिटी को प्रमोट किया जाता है जैसे अगर मेन और वुमेन को हम बोले बराबर है तो हमने यहाँ पर इंक्लूसिविटी ली है एंटोनिम हो जाएंगे एक्सक्लूसिविटी या बायस या डिस्क्रिमिनेशन भाई डाइवर्सिटी स्टैंडर्ड क्या है मैं सबको रिप्रेजेंटेशन दे रही हूँ सबको इक्वल वो है रिप्रेजेंटेशन है आप किसी भी कल्चर से आओ हम आपकी मूवी को रिप्रेजेंट करेंगे नॉमिनेट करेंगे बिकॉज यू कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट कल्चर और मे बी अ डिफरेंट बैकग्राउंड तो एक्सक्लूसिविटी क्या हुआ उसका उल्टा हो गया जब आप ये रिप्रेजेंटेशन नहीं दोगे आप उन्हें एक्सक्लूड करोगे इंक्लूड नहीं करोगे आई गेस यस एब्सोल्युटली राइट द नेक्स्ट वन डेकोरम अपने आप में एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है किसी भी चीज को जैसा वो होना चाहिए वैसे उसे रखो उसे वैसे ही फॉलो करो सो व्हेन यू फॉलो डेकोरम आप उस चीज को उस तरह से करते हो जैसे वो होना चाहिए सो यहाँ पर जेनरली इट इज कैरेक्टराइज बाय सेंस ऑफ डिग्निटी पोलाइटनेस एंड रिस्ट्रेंट तो लेट्स से नॉट बीइंग लाउड और यू नो बीइंग प्रॉपर so the state of being proper, the art of being proper is maintaining decorum. And disregard कर दिया और हम rude हो गए या improper हो गए, impropriety हमने show करी, so we are not maintaining decorum. Slag off. So when you criticize or when you disparage something, you're slagging them off. तो simply किसी को denigrate करना, किसी को slander करना, किसी के बारे में गलत बोलना is simply slagging off. How it was used in the sentence? Say Jimmy Kimmel took his chance to slag off Donald Trump. भाई डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी किसी प्रीवियस आई गेस रिमार्क में प्रॉब्लली शायद ट्विटर में कहीं पर जिमी केमल के होस्टमैनशिप को क्रिटिसाइज करा था डेनिग्रेट करा था यहाँ उन्हें मौका मिल गया एंड आई गेस ही रोट इजंट इट पास्ट योर जेल टाइम सो यहाँ पर उन्होंने स्लैग ऑफ करा क्रिटिसाइज करा डोनाल्ड ट्रंप को सो इट सिंपली मीन्स टू क्रिटिसाइज टू मॉक टू डिस्पैराज टू डेनिग्रेट सिंपली मॉक होता है रिडिक्यूल करना किसी का मजाक उड़ाना किसी को आई गेस दैट सेज इट राइट रिडिक्यूल करना इज खिल्ली उड़ाना मजाक उड़ाना किसी का सो स्लैगिंग ऑफ सिंपली मीन्स डूइंग आइदर ऑफ दीज और एनी ऑफ दीज एंटोनिम क्या हो जाएगा भाई अगर मैं तुम्हारा मजाक उड़ा रही हूँ इफ आई एम स्लैगिंग यू ऑफ तो तुम्हें तारीफ करना कमेंड करना अपलॉड करना या सपोर्ट करना विल बी आई गेस द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड द नेक्स्ट वन सबवर्सिव सबवर्सिव इज अ टेंडेंसी दैट वी हैव अगर मैं सबवर्सिव हूँ तो दैट मीन्स मेरे अंदर सबवर्ट करने की टेंडेंसी है सबवर्ट इसी का वर्ब फॉर्म होता है सबवर्ट अगर हम करते हैं तो हम दबंग टाइप के लोग होते हैं और हमें लगता है अच्छा ऐसा नहीं इसको तो ऐसा करेंगे तो ये पलट के रख देने वाली जो टेंडेंसी है ना वो होती है सबवर्सिव क्वालिटी बहुत सारे लोगों में होती है बहुत सारे लोगों में नहीं होती सो टेंडिंग टू अंडरमाइन और ओवर थ्रो एस्टैब्लिश सिस्टम और इंस्टीट्यूशन तो दबंग है हम बिल्कुल मतलब ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा हटाओ
इसको तो बिल्कुल हटा दो. सो सबवर्ट करना का मतलब होता है पलट के रख देना. एंड सबवर्सिव टेंडेंसी इट्स एन एडजेक्टिव, तो सबवर्सिव लोग सबवर्ट कर पाते हैं. ओके. सो सिनोनिम हो गए इसके रेवोल्यूशनरी, रिबेलियस, सेडिशियस, इंसर्जेंट. सोचो ना, रिबेलियस कौन होगा? जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर थे तो मंगल पांडे ने जब बोला मैं तो नहीं करूंगा जो आप बोल रहे हो, मैं तो इस बुलेट को अपने मुंह में नहीं डालूंगा, कार्ट्रिज को नहीं डालूंगा अपने मुंह में, तो ही वॉज अ सबवर्ट, ही वॉज अ रिबेलियन. उसने बोला मैं ऐसा नहीं करूंगा. सो ही काइंड ऑफ डिफाइड द अथॉरिटी. तो वो सबवर्सिव टेंडेंसी थी उनके अंदर की, जिसकी वजह से वो ऐसा कर पाए थे. Antonym होता है, oh great Sanjit, it's a good way. Tenants, yes, absolutely right, Jeet. Now the next, so इसका antonym हो गया conform करना. देखो conform करना होता है comply करना, मानना बात को. Okay, obedient, loyal and compliant. ये लोग वो होंगे जो yes boss होंगे. ठीक है सर, आपने बोला है, चलिए ऐसा कर लेते हैं. मगर subvert कौन होंगे? जो बोलेंगे subversive कौन होंगे? जो बोलेंगे नहीं हो पाएगा, नहीं करेंगे. So these people, they defy. Held sway is a past form. The word actually, the phrase actually is hold sway. Hold sway का मतलब होता है to exercise influence or control over a situation or people. So कोई चीज अगर आपके ऊपर hold sway करती है तो it has an influence on you. आपकी opinion को influence कर पाती है वो चीज if it holds sway. So it means to dominate, control, or influence. The antonyms are yield, surrender, or relinquish. दबा देना किसी को, and that's what it is. Perhaps the gloomy mushroom clouds of Oppenheimer. Mushroom clouds, I hope if you've seen the movie Oppenheimer, you know what mushroom clouds are. Held sway among Academy voters. So it had an influence. That's why Oppenheimer won, I guess, 5 or 7 um, awards, the best one being Cillian Murphy's Best Actor Award. Okay, chime आवाज है, so it's a sounded harmoniously or resonate in agreement. देखो chime का वैसे literal meaning तो होता है आवाज, that sweet sounding आवाज. But यहाँ पर अगर resonation है, अगर agreement है, तो भी we've used it in this context here, but literal meaning of chime is that sound. But here figuratively it means harmonized or echoed or resonated or agreed. Agreement है यहाँ पर if it's chiming, a positive connotation in general. So disagree करना, clash करना, differ करना, discorded होना is the opposite. Jonathan Glazer's sentiment upon winning Best International Award chimed with the pro-Palestinian protesters. उन्होंने उनके बारे में क्योंकि मूवी बनाई and he talked about them, so probably the opinions or the thought process, it chimed. It was in harmony, in sync with one another. Absolutely right, Jeet. Okay. The quiz time now. We are done with the words. Now let's see what we remember. Are we ready? देखें साथ में करें quiz को. So what does the phrase slag off mean in the passage? Does it mean to praise? Does it mean to criticize or disparage? Does it mean to host an event or does it mean to applaud or support? What does it mean? Quickly. बताओ. जल्दी जल्दी जल्दी. If you don't need the word get there. Hee hee. Oh, no, you don't use it that way, Sanchit. Things chime. You don't use helping verbs before this. Okay, yes, it simply means to disparage. तो slag off था किसी को disparage करना. The next one, ruffle. Ruffle होता है. So if I ruffle your hair, I kind of uh, ruffle them, or maybe ruffle them. तो रफल ये वाला मूवमेंट होता है, जैसे आप डॉग आता है आप उसको प्यार से ऐसे करेस करते हो, उसके बालों को करते हो ना, यू रफल द अरेंजमेंट है. जब हम रफल करते हैं तो हम ऐसे कर देते हैं, बाल खराब हो जाते हैं उसमें. टेल मी व्हाट डज इट मीन. यस एब्सोल्युटली राइट, ग्रेट माइंड्स चाइम अलाइक. एस की जरूरत नहीं थी वहां पर. यस एब्सोल्युटली राइट, रफल मीन्स टू डिस्टर्ब द अरेंजमेंट. सो इफ यू रफल समथिंग यू काइंड ऑफ डिस्टर्ब द अरेंजमेंट. ओके. सो लेट्स से आपका प्लान था, बोर्ड्स खत्म हो गए हैं, अब तो फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने जाना है. मम केम एंड शी सेड ओके, आई ऑलवेज मेक मम द विलेन, आई डोंट नो व्हाई. सो मे बी somebody came and said मूवी क्यों जा रहे हो, नहीं जाना, घर पे बैठेंगे पार्टी करेंगे. तो दे हैव रफल्ड योर प्लान, दे हैव डिस्टर्ब्ड योर प्लान्स. टाइम. टाइम.
Does it mean disagree? Does it mean echo? Does it mean ignore? Does it mean clash? What does it mean? Let's see what we remember. We just discussed it. It means to echo or resonate. The next one, inward looking. The opposite of inward looking. I guess this one is simple. If inward looking is, we need the opposite of inward looking. Introvert, outward, isolated, contemplative. Contemplative होता है सोचना, गहन चिंतन करना, सोच विचार करना. करते हैं हम सोच विचार. I guess the opposite of inward looking can only be outward looking. The next one, undeniable. Deniable, deny करना होता है मना करना. I refuse. When I refuse something, I deny, right? तो undeniable हो जाएगा. Deniable है जिसको मना कर सकते हैं. Undeniable will be the opposite. It means unquestionably. Here it means unquestionably. Okay, clapped back. So when you clap something back, what do you do? When you clap something back, you kind of retort. जब आप किसी चीज को retort करते हो, पलट के जवाब देते हो, and that is when you clap back. So you kind of respond assertively to state what you want to state. That's what clap back means. I guess that's about it. With this, I come to the end of this amazing session. I had a lovely, lovely time discussing these two articles with you, discussing the words of these two articles with you. I hope you have made notes and you will be able to retain these words. So, see you in the next session, and either my colleagues or I, somebody will be back in the next session to take you through the next passages in days to come. Take care. Love you. Bye.